I'm actually waiting till 2 o'clock. What I'll do is at around 2 o'clock, I will look at what Nifty, Banknifty and Reliance are doing. If Nifty and Banknifty are near day lows, I will look for a scalp buy. If they are not at day lows, are probably around these levels, 350 levels, then I'll look for a scalp sell. But I wouldn't really do anything before 2 in all three. Reliance I think it's already gone wherever it had to, so I wouldn't really be interested in doing Reliance now unless it comes up or it probably falls more for a buy. So yeah, आज मैं निफ्टी में 2 बजे तक वेट करूँगा. 2 बजे के बाद मैं देखूँगा कि निफ्टी में कैंडल कहाँ पर है. अगर वो डे लो के आसपास है तो मैं 2 o'clock का लो रख के बाय कर लूँगा. अगर वो वी के आसपास है तो मैं 2 o'clock का हाई रख के सेल कर दूँगा. बैंक निफ्टी में भी मैं वही करना चाहता हूँ. 2 o'clock के आसपास देखना चाहता हूँ कहाँ पर रहेगा कैंडल. अगर डे लो के आसपास रहेगा तो मैं उसको स्कैल्प के लिए बाय करूँगा, नहीं तो स्कैल्प के लिए सेल करूँगा. थैंक यू.